सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं जगदीश यादव, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत मेरे चैनल गीतांजलि में। आज हम लोग बात करने वाले हैं आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर एंड मॉडल मैट्रिक्स पे। ओके, सो आइगन वैल्यूज क्या होते हैं, आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं, मॉडल मैट्रिक्स कैसे डेवलप करते हैं, इस पे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। सो अगर हम इन चीजों को समझ लेते हैं तो हमारे लिए बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। सो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आपको कुछ प्रोसीजर, जो इसका एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, उसको बताना चाहूंगा। ओके, सो दी procedural steps are basically procedure is first step. So step 1 is basically develop characteristic equation. Okay, find characteristic equation and सभी लोग जानते हैं कि characteristic equation क्या होती है। That is determinant of a minus lambda I that must be equal to 0. So this is the common steps for all. Next step is basically find the eigenvalues. Okay, find eigenvalues. Step number 3, for each eigenvalue find the eigenvalue. For each eigenvalue find eigenvector. Okay, next with the help of these eigenvector find model matrix. Okay, so with the help of these eigenvectors, vector develop model matrix. So उम्मीद करता हूँ ये स्टेप्स आपको क्लियर हुए होंगे। So चलिए अकॉर्डिंग टू दीज स्टेप हम इस गिवन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। ओके, तो द सॉल्यूशन इज, क्या है सॉल्यूशन? तो सबसे पहले जो गिवन मैट्रिक्स है, तो हियर द गिवन मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 0 0 0 3 -1 0 -1 and 3. So this is the so as per the procedure, the step 1 is develop the characteristic equation. So the characteristic equation of given matrix, so that is a minus lambda I, determinants of a minus lambda I, that is equal to 0. Okay, so 1 minus lambda 0 0 0 3 minus lambda minus 1 0 minus 1 3 minus lambda, okay, equal to 0. When we'll solve these particular determinants, जब हम इस determinant को solve करेंगे, so the value will be 1 minus lambda, okay, and it will be 3 minus lambda whole square minus 1 and rest of part will be 0. okay, so यहाँ पर basically हमने एक्सपेंशन किया है, R1 एक्सपेंशन का इस्तेमाल हमने किया। सो व्हेन वी विल सॉल्व इट फर्दर, so it will be 1 minus lambda 3 minus lambda minus 1 and it will be 3 minus lambda plus, okay, equal. When we will simplify it, so it will be 1 minus lambda and it will be, that will be 2 minus lambda and 4 minus lambda. Okay, so from here, therefore lambda equal to 1 2 and 4. So these are basically the eigen values. ओके, तो इस तरीके से हमने आइगन वैल्यूज निकाल लिया। तो required आइगन वैल्यू दैट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा, वैल्यू ऑफ ओके, तो लैम्डा इक्वल टू 1 2 ओके, सो दीज आर बेसिकली द रिक्वायर्ड वैल्यूज फॉर द गिवन मैट्रिक्स ए। सो नेक्स्ट स्टेप, हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को फाइंड आउट कर लिया है, हमने आइगन वैल्यूज फाइंड आउट कर लिए हैं, और नेक्स्ट क्या है, फॉर ईच वैल्यू ऑफ लैम्डा वी हैव टू फाइंड आउट द आइगन वेक्टर। ओके, सो वी विल फॉलो द स्टेप नंबर 3. So this is the step number 2, step 2. So now the step 3. So now step 3, we have to find out the eigenvector. Okay, so to solve the eigenvector, what we will do, we will consider the lambda's value one by one and find out the vectors. Okay, so when lambda equal to 1, the eigenvector by matrix equation a minus lambda I into matrix x, that is equal to 0. Okay, so therefore, so it will be 0 0 0 0 0 2 minus 1 minus 1 2 and the matrix X will be x1 x2 and x3. Okay, that is equal to again matrix 0 0 0. Okay,
So on solving these equations, so it's give you what it's give you. So the equation will be that 2x2 minus x3 equal to 0, and minus x2 plus 2x3 equal to 0. Okay, and it will be 0x1 plus 0x2 plus 0x3, that is equal to 0. So these are the equations for the given matrix format, above matrix formats. So on solving the equations, these equations and this equation, we will find out the values of x2 and x3. Okay, so how we will solve it? So further proceed. So 2x2, that will be x3. Okay, and from here it will be, that is 2x3 equal to x of 2. Okay, so on solving these equations, we will find out that x1 is equal to, let k, and x2 equal to 0, and x3 equal to 0. Now the question arises that how we will guess these particular values. So put the value of x2 in here. So put this value here. The equation will be that is 4 times of x3 equal to x3 simply. So x3 will be cancelled out. It means x3 equal to 0. If x3 is the 0, then x2 will be also 0, and let x1 is the k, and so the vector will be, so vector x will be 1 0 0. Okay, now the question arises ki why you have taken the value of k is 1. So it's a standard format that k की वैल्यू आप 1 ही लेंगे आइडियली. सो इस तरीके से देखिए हमारे पास में x1 आ चुका है फॉर द लैम्डा 1. सो फॉर लैम्डा equal to 1, we have to find out the matrix, the eigenvectors. Okay, same, that is a case number 2. For lambda equal to 2, the eigenvalue, the eigenvector will be that will be -1 0 0 0 1 -1 0 -1 1, and let the matrix x again will be x1 x2 and x3. This is the eigenvector variables equal to 0 0 0 again. So when we'll solve this equation, so it's give you the x1 equal to 0 simply, and x2 equal to x3, and minus x2 plus x3 equal to 0. So let equal to k, that is we have considered let. Okay, so on the basis of this one, so the vector x2, that will be 0 k. So as we are saying that let k equal to 1, that is a standard value, so it will be 0 1 1. ओके, सो इस तरीके से हमारे पास में लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए आइगन वेक्टर आ चुका है, जो कि आपका दिस इज द आइगन वेक्टर 0 1 1.
same as for lambda equal to 4. So for next value for lambda equal to 4, again the eigenvector will be, that is eigenvector will be how much? That will be 3 0 0 0 minus 1 minus 1, and again 0 minus 1 minus 1, and let the vectors are x1 x2 x3 equal to 0 0 0. Okay, so on solving these equations, so equation will be minus 3x1 that is equal to 0, and minus x2 minus x3 equal to 0, and again minus x2 minus x3 equal to 0. Okay, so on solving these equations, so on solving equations, the values will be x1 equal to 0, x2 equal to 1, and x3 equal to minus 1. Therefore the vector will be, so vector x3 will be 0 1 and minus 1. ओके, सो दोस्तों आपके पास में वेक्टर्स आ चुके हैं, और वेक्टर्स की जो मैट्रिक्स है दैट इज वेक्टर्स की जो मैट्रिक्स है स्टेप नंबर 4, दैट्स गिव यू द मॉडल मैट्रिक्स. सो रिक्वायर्ड required model matrix that is equal to matrix P. Okay, so matrix P will be, that is the matrix of x1 comma x2 comma x3. So these are basically here x1 x2 x3 are the vectors, eigenvectors. So here x1 comma x2 comma x3, these are basically the eigen. Okay, for lambda equal to 1 comma lambda equal to 2 comma lambda equal to 4. So the required matrix will be, so it will be 1 0 0 0 1 1 and 0 1 minus 1. So this is basically the required model matrix. ओके, सो उम्मीद करते हैं कि आपको आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर और मॉडल मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं ये चीज़ आपको समझ में आई होगी. सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डेवलप करेंगे. कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से हम लैम्डास की वैल्यूज़ निकालेंगे, और हर एक लैम्डास वैल्यूज़ के लिए हम मॉडल मैट्रिक्स से, बेसिकली मैट्रिक्स फॉर्मेट से आइगन वेक्टर्स निकालेंगे, जो कि x1 x2 x3 बेसिकली वेरिएबल्स के फॉर्म में होंगे, और फिर उन सभी आइगन वेक्टर्स को हम कॉलम वाइज अरेंज कर देंगे. सो हमें जो बेसिकली है वो मॉडल मैट्रिक्स रिसीव हो जाएगी. सो इस क्वेश्चंस को आप लोग खुद प्रैक्टिस करें. अगर कोई डाउट्स या क्वेरी हैं तो आप कंसल्ट कीजिए. बहुत बहुत धन्यवाद. सभी दोस्तों को नमस्कार. मैं जगदीश यादव. आज मैं एक और प्रॉब्लम डिस्कस करने वाला हूं आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर एंड मॉडल मैट्रिक्स पे. यहाँ पे एक मैट्रिक्स ए दे रखी है, जो कि जिसके एलिमेंट हैं रो वाइज -2 5 4 5 7 5 7 5 4 5 -2. ओके, तो देखते हैं कि इस पर्टिकुलर गिवन मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर और मॉडल मैट्रिक्स क्या. ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे. सो सबसे पहले सॉल्यूशन, सबसे पहले एज यूजुअल जो भी गिवन वैल्यू है उसको नोट डाउन करेंगे. सो हियर द गिवन मैट्रिक्स
matrix, that is matrix A is equal to -2 5 4 5 7 5 and 4 5 -2। ये आपकी गिवन मैट्रिक्स है और इस गिवन मैट्रिक्स का सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस डेवलप करेंगे। सो स्टेप नंबर वन दैट इज A minus lambda I that is equal to 0, therefore the equation will be -2 minus lambda 5 4 5 7 minus lambda 5 4 5 -2 minus lambda. Okay, so this is basically your characteristic equations and equal to 0. Okay, so when we will find the determinant of this particular matrix, okay, so the determinant of this matrix equal to 0, so that will be, so the equation will be, I'm solving directly, you solve it as you want. So the equation will be lambda 3 minus 3 lambda square minus 90 lambda minus 216, that is equal to 0. Okay, so this is the equation. You can find out the lambda's values. So step number 2, find out the value of lambda. So here I'm just going to solve it with calci, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। आप लोग भी इसको सॉल्व कर सकते हैं calci का इस्तेमाल करके। So the value will be lambda, so the lambda 1 that is equal to -3 and lambda 2 will be -6 and it will be 12. So these are basically the required eigenvalues. So these are basically the required eigenvalues, the required eigenvalues. Okay, next step number 3, that we have to find out the eigenvector. So for eigenvector we use for lambda 1, for lambda 1 equal to -3 comma lambda 2 equal to -6 and lambda 3 equal to 12. Okay, so we will with the equations, that is A minus lambda I into capital X equal to 0. So that is for lambda 1 equal to -3, so it will be, so lambda equal to -3, it will be, that will be 154 5 and 5 and 4 5 1 into variables x1 x2 and x3, that is equal to 0. Okay, so on solving, the equation will be x1 plus 5 x2 plus 4 x3, that is equal to 0, and 5 x1 plus 10 x2 plus 5 x3 equal to 0, and 4 x1 plus 5 x2 plus x3 equal to 0. So on solving these equations, so we can solve this equation with the help of cross multiplication method also. So if we will use the cross multiplication method, so it will be x upon the coefficient of these, so it will be the coefficient of these means this and this, so that is a 25 minus 40 and the equation, that is a x1, that is the x2, when we will talk about the x2, so the coefficient will be that is equal to 20 minus 5, that is equal to x3 coefficient will be 10 minus 25, so x1 upon, that will be how much, on solving these equations, 25 minus 40 20 and this will be how much, 25 20 and that will be 15 minus 15, that is equal to x2 by again 15 equal to x3, that is again minus 15, so it will be cancel out and so it will be x1 minus 1, x2 is 1 and x3 is again minus 1. So the required matrix will be, so values will be 1 and -1 okay, so -1 and 1, these are the values. So if you solve these values, so it will be, let on solving, so let equal to k, so x1 equal to minus times of k, x2 equal to k and x3 equal to minus times of k. So the required values will be, either you can write this one, either you can write the k will be common, so it will be -1 1 and -1. Okay, so this is the eigenvalue. For the eigenvalue equal to -3, we got the vector x1. Okay, same as case number 2 for lambda equal to
-6. The x2 will be, I'm solving directly, you may solve it. It will be -1, 0 and 1, same as for lambda 3 equal to 12. The eigenvector x3 will be, I am writing down directly the answers, you might solve it. It will be 1, 2 and 1. So on combining these equations, the required, that is step number 4, the required answer, required model matrix P. So the matrix will be, that will be the value of x1 comma x2 comma x3. So the answer will be, I hope so, that is what, that is x1 1 1 1 minus 1 1, that is -1 1 1. So -1 1 -1, and next x2, the value of x2, that is the value of x2 -1 0 1, so -1 0 and 1, and that is the x3, that is equal to 1 2 1. So this is the required matrix, this is the required model matrix for given matrix. उम्मीद करते हैं कि आपको आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर और मॉडल मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं ये समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।